Okay, good evening, everyone. Very warm welcome to the session. I'm sure everybody's in. Great. So I can see that everybody's in here now. So let me start with the session here. The agenda for this session would be, we would help you out with the cutoffs. We would help you out with SAT General, how things are, how it should be, Kaisa paper and everything about this, right? A very warm welcome to everyone. I'm sure everybody's in. Great. So if you can hear me, I would request you to please make sure that you drop in a hi for us. If you can hear me, I would request you to please drop in a hi for us. Great. So I'm audible to everybody. Chaliye. So let's start with the session here. In this session, we would be helping you out with paper kaisa tha, kya karna chahiye tha, and so on and so forth. And the final thing is, what is a cutoff, right? So cutoff is one of the important elements we'll be discussing, and that's how we'll be going. So let me start with the session here. I welcome all our guests here, Greece sir, Hema ma'am, Rahul sir. A very warm welcome to the session. So how was the paper, Greece sir? How was the paper? One liner, if I may understand. सर मैं अगर आज की बात करूँ ना तो आज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है राइट. अगर आज जो भी पेपर हो रहे, मेरे को जो भी फीडबैक्स स्टूडेंट से मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है. तो आई थिंक अगर मैं अपने वाले सेक्शन के स्पेशली बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो तो स्पेशली वो लोग बहुत ही एक्साइटेड है उसके लिए राइट. बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा है उन्हें कि सर ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ, हम किस लेवल में प्रैक्टिस करके गए थे और ये क्या क्वेश्चन आ रहे हैं राइट. सो आई थिंक सेट की भी बात करें अगर जनरल की, तो इसका पेपर का लॉजिकल रीजनिंग का लेवल वाज इजी सर. प्रीटी डुएबल क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चंस थे ओनली. आई गेस कि सबसे छोटा पार्ट यही था लॉजिकल रीजनिंग, एंड अच्छा ही हुआ सबका जो भी मेरे को रिव्यूज मिल रहे हैं. Correct. So Rahul sir, I hope you would also say the control C, control V. Yes sir, exactly same sir. QA का अगर बात करें मैथ्स का सर, काफी इजी क्वेश्चंस आए थे. 16 क्वेश्चंस ऑल और मतलब सारे के सारे डुएबल थे. ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने कभी ना कभी क्लास में हैंडआउट्स में डिस्कस किए गए हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं किया गया था क्वेश्चंस को. तो जैसा सर ने बोला, आज का दिन बच्चों के लिए अच्छा था. तो बच्चे मतलब काफी खुश हैं एग्जाम को देखे कि हाँ सर, कि हमने जितना पढ़ा था उतना दे पाए, और एज एक्सपेक्टेड जितना लग रहा था उन्हें उससे थोड़ा सा पेपर इजी आया. तो बच्चे काफी कॉन्फिडेंट है सर आज को लेके. अगर बात करें पेपर की तो इजी साइड था सर पेपर. थैंक यू राहुल सर. सो हेमा मैम, आई एम श्योर इसी चीज को आप कंटिन्यू कर पाएंगे, एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आई एम श्योर यू विल बी इन अ पोजीशन टू हेल्प अस आउट विद जो चीज हमने की थी क्लास के अंदर, और वो मंथली कंपेंडियम जो किए थे उसमें से क्या क्या आया और कैसे कैसे आया. इफ यू कैन हेल्प अस आउट इन द डिटेल, दैट वुड डेफिनेटली बी हेल्पिंग अस. So first of all, a very good evening to all the students who are attending this session, right? And if we talk about general awareness section in Symbiosis SAT general paper, right? So I'll say if I compare it with SLAT paper, it was on the moderate side. SLAT GA was very much easy, but SAT general is on easy to moderate. Well, not difficult, but easy to moderate. Reason being, there were few questions जो indirect पूछे गए थे. बट यस, अगर बच्चों ने स्टैटिक जीके की मिसलेनियस क्लास की हो, अगर स्टैटिक जीके में उन्होंने इको की क्लास की हो, देन करंट अफेयर्स के हैंडआउट्स कवर किए हो, अपने लास्ट 8 मंथ्स का मंथली कंपेनियन एंड क्वेश्चनर कवर किया हो, मैक्सिमम क्वेश्चन वो आराम से कर पाएंगे. नाउ देयर वर फ्यू क्वेश्चन जो आपका हम कह सकते हैं कि जो न्यूज में ज्यादा थी. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज इन न्यूज फ्रॉम पास्ट 2 years, 2.5 years. So अभी तक बच्चों को उसका हेडक्वार्टर, उसके हेड्स, उसका सिंबल, उसका एम्बलम, द मीनिंग, राइट, एवरीथिंग शुड बी ऑन देयर टिप्स, जो क्लास में भी हम बार बार रिपीट करते हैं. सो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पे थे. तो few indirect questions on telecommunication sector and some we can say that regional festivals. So हो सकता है बच्चे को वो इतना ना पता हो, but if student remember my strategy session, उसमें I told them very clearly that festivals, art and culture, these things are very important. अगर कहीं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, if that is in news, you should know कि वो किस स्टेट से रिलेट करता है. So जो स्ट्रैटेजी सेशन में बताया गया था उससे काफी मिलता जुलता पेपर आया था. So now sir, if you allow me, I want to do a detail analysis. Absolutely, ma'am. If you can help us out with the detail. Sure, sir. And for that, I'll just quickly share the screen. I want to write few important pointers. So if we talk about the SAT general paper, sorry for that, 2022. So total question may say, I think my iPencil is making some issue. Just a second. Yeah.
So there were 16 questions from general awareness part. And I'll say out of these 16 questions, 10 were easy and 6 questions were of moderate level. Right? And when we talk about the questions, right, के static के कितने थे and हमारा अगर हम बात करें current affairs के कितने थे, so if I include the miscellaneous question as in static questions related to current affairs, if I include that too in static GK, so we can say that there were 9 questions from directly current affairs part, and there were 7 questions which includes the static GK and miscellaneous part. Right now, if I talk about the areas from where the questions have been asked, so there were questions on books and authors. And very interesting question was there. Question was that question में नाम पूछा गया था that what is the title of the last book written by Dr. APJ Abdul Kalam. Right, so interesting question. इसकी लिस्ट हमारी बुक में भी है, बुक्स एंड ऑथर्स में भी हमने दिया हुआ है, so बच्चे के लिए important था ये सब जानना, and काफी easy and direct question था ये. So if I talk about this, so question was last book written by APJ Abdul Kalam. Now next question, there were question on important days and class में भी काफी बार बच्चों के साथ important days का discussion हुआ है, handout में भी काफी days discuss किए गए हैं, and in fact if we talk about the current affairs booklet, we have provided you a list of important days of every month, and जिस day पे question आया था that is World No Tobacco Day. Right, easy direct question. Then as I said that there were 1 question from economy में RBI पे question था, so एक static question था from your economics part. Then there were 2 questions from sports, right, direct questions थे. Then if we talk about WHO International Organization, इसके symbol पे question था. Then there were 2 questions from awards and honors, right, जिसमें one was related to Padma Shri and another was related to Khel Ratna. इसके अलावा there were question on the capital of the countries. Then there was a single question on festival, right, and there were questions on telecommunication. Now an interesting part, इसके अलावा there were 4 questions which were directly or indirectly related to Indian defense. And इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके आई कैन से कि सिम्बायोसिस के जो एग्जाम है उसको कहीं ना कहीं आपका एसईटी जनरल में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएगा, जिसका शायद एक जो रीजन है वो ये है कि जो फाउंडर्स है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के, दे हैड अ डिफेंस बैकग्राउंड. सो आई डोंट नो, मे बी दैट इज द रीजन कि हर साल डिफेंस के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं. बाकी किसी पेपर में अगर हम देखेंगे इतना ज्यादा डिटेल में जाके डिफेंस पे क्वेश्चन नहीं आता कि बजट में कितना % दिया गया, ये क्वेश्चन था. बट अगर हम बात करें सिम्बायोसिस की, देयर वर 3 क्वेश्चंस व्हिच वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इंडियन डिफेंस. सो दीज वर द मेन सेक्टर्स, जितना मुझे अभी पता है, दैट दीज वर द एरियाज जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे. एंड इफ आई टॉक अबाउट नाउ द आइडियल अटेम्प्ट out of 16 questions of general awareness, I can say that when we talk about ideal attempt, जो 10 easy questions थे, right, वो तो आप कर ही सकते हो. बट yes, जो moderate level question थे उसमें भी आप चांस ले सकते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, right, so आप अटेम्प्ट कर सकते थे, right question. So with accuracy, if I talk about, so 11 to 12 questions with 100% accuracy in general awareness should be your ideal attempt. And अगर मैं बात करूँ टाइम की कि कितना आपको ideal टाइम इसमें लगाना चाहिए था, as I said earlier also कि GA के questions करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है. 16 क्वेश्चन थे, 5 मिनट्स काफी थे, बाकी टाइम आप अपने बाकी सेक्शंस को देख सकते थे. So 11 to 12 क्वेश्चन आइडियल अटेम्प्ट. अगर हम ओवरऑल इसका देखा जाए कि डोमिनेटिंग पार्ट क्या था, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस स्टैटिक जीके इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ये डोमिनेटिंग पार्ट था इन एसईटी जनरल. सो जो बच्चे वो भी देख रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक छोटा सा सजेशन होगा, whenever you are learning current affairs facts, right, always try to relate and learn the static GK facts related to that. For example,
let's say if I take the example of WHO. So if we are talking about a news, or if you are reading about a news of WHO, you should be, you know, in that position that you know the headquarter of WHO, the head of WHO, symbol of WHO, and the establishing year of WHO, and the main functions. Now, let's say अगर कोई news है, for example, monetary policy established by or introduced by RBI. So RBI की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए when RBI was established, when it was nationalized, who was the first governor of RBI, who was the first Indian governor of RBI, and who is the current governor of RBI. इस तरह से वो relate करके 360 degree knowledge पे questions पूछ रहे हैं, not just in symbiosis exam, in fact in all exam they are doing this कि वो current affairs से relate करके static information पे question पूछ रहे हैं, right? So overall the level of GK section of this paper was moderate, rather I'll say easy to moderate. So that's all from my side, sir. Praveen sir. Absolutely great, ma'am. So it's always like a make or break section, right? Because Yes, 5 sir. minutes and so many questions that one can solve. और नहीं Yes. पता तो वो अपने आप ही break हो जाएगा, अगर पता है तो make हो जाएगा. That's obviously the case. Thank you. So thank you, madam. Now let me go to Rahul sir. And Rahul sir, quants, if we talk about, how would you take that in case if you can help us out with what should be the cutoff and all? Little Sure. quickly, if you may help us out with. Sure, sir, please. Just a minute, sir. Sir, जैसे अभी as I discussed, पेपर काफी इजी था, right? So क्वेश्चंस तो सारे के सारे डुएबल थे. Just give me 1 minute. I'm just sharing my screen. Just a minute. Sir, आप मुझे एक बार host बना देंगे, प्रवीण sir? Absolutely, I'll get it done, The sir. support team, man. Thank you. I'll get it done. You are the one. You can share this. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Sir, the support team करके एक होगा. I think आपको उसको host एक बार करें. I think now I can make. You can. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. So if we talk about QA, as I said, आज का दिन अच्छा था, जैसे ग्रीस सर ने बताया, तो QA के क्वेश्चंस डेफिनेटली इजी थे, राइट? तो अगर हम 16 क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, जब हमने स्ट्रेटेजी सेशन में बात की थी कि सारा का सारा आपको बेसिक मैथ्स पे फोकस करना है, एंड जितने भी हैंडआउट्स में जो भी चीजें हमने बताई हुई हैं, अगर आपने थोड़ा भी बेसिक मैथ्स किया है हमारे नॉलेज टाइमर से, देन आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड सेम एज एक्सपेक्टेड पेपर हमारे पास आया. अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, देन हमारे पास नंबर थ्योरी, उसमें से स्टूडेंट्स हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए. जब लास्ट टाइम हम स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बता भी रहा था साथ के साथ कि टाइम डिस्टेंस स्पीड से आया या नहीं आया, ये सब चीजें मैंने बताई थी किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे. एंड काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न ही रिपीट हुआ है, तो कुछ न्यू नहीं किया उन्होंने, एंड सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट परसेंटेज, इन परसेंटेज देयर आर ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था बिल्कुल भी. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जैसे पहले भी पूछे गए हैं, हमने कराए हुए हैं, सेम क्वेश्चंस थे. डीआई की बात करूं स्टूडेंट, देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम डीआई, स्ट्रेट फॉरवर्ड. पीएनसी को बेसिक मैथ्स में इंक्लूड करते हैं, वैसे आई नो ये 11th क्लास का टॉपिक है, बट बेसिक पीएनसी अब पूछा गया था. एंड प्रोबेबिलिटी, समटाइम स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी को कंबाइन कर दिया जाता है, तो उससे 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हमारे आज के एग्जाम में. मैं अलजेब्रा की बात करूं स्टूडेंट, अलजेब्रा में मींस लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस. देयर आर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा, जो कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस पे बेस्ड थे. अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, रूट्स के बारे में पता है, देन डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने स्ट्रेटेजी में बताया था कि मेंसुरेशन से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस बार भी एरिया एंड पेरीमीटर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट हाँ डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे गए थे. एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था. एवरेज की बात करें स्टूडेंट्स, एवरेज से हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए आज के एग्जाम में. एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की बात करें स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस स्पीड से नहीं पूछा गया था. तो मैंने आपको बताया भी था, लास्ट ईयर अगर नहीं पूछा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस बार डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा. यस, एंड इस बार हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो अगर स्टूडेंट मैं इन 16 क्वेश्चन की बात करूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि कंफ्यूजिंग था, कि बहुत ज्यादा ट्रिक यूज की हुई हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको कैलकुलेशन, आपके साथ कैलकुलेशन में आप हैंडी हैं, आपको फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न है, देन डेफिनेटली आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे. तो क्यूए डेफिनेटली इजी पार्ट था.
एज कंपेरिजन टू अदर एग्जाम्स। अब पॉइंट ये होता है कि सर 16 क्वेश्चंस में से हम कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी के साथ कहूं तो डेफिनेटली एटलीस्ट आपको 10 से 12 क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए विथ एक्यूरेसी। डेफिनेटली आप 16 के लिए भी जा सकते हैं। एज आई सेड क्वेश्चन सारे इजी थे, बट हाँ विथ एक्यूरेसी आपके 10 से 12 मार्क्स तो डेफिनेटली 16 में से बनते ही हैं एज पर दी पेपर, जैसा पेपर पूछा गया। तो एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, कोई इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, तो पेपर बहुत ही इजी था सर। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर। Okay. So what you're saying, out of 16, there are 10, 12 questions that you say. So on an average, one can chalo to 11 question is something. Agar iska average Definitely doable. 11 yes. is the question. With The one that you accuracy. talk about would definitely make sense. Yes, Thank you, sir. Thank you for your great help here. Now let me go to the analytical and logical reasoning. So if I may take help, Grisha, I think, okay, no worries for that. Grisha would join us soon. I think there will be some network issue with him. Let me help you out with my system. Rahul sir, I would request you to please make me the host again. sure. Rahul sir, please. Right. So let me help you out with the verbal section first, and then obviously you would have analytical and logical reasoning as well. So let me help you out with this. Give me a second, please. So if you talk about the paper, as we already said, there was no negative marking and the paper was evenly distributed. जैसा हमने expect किया था, जैसे हमने चीज़ों के बारे में बात किया था, वैसे पेपर था. Welcome Nandini, welcome Kavya. Right. So I hope you would understand this. The paper remains same. Paper was on the same pattern. There was nothing new, but there were hardly one or two questions. I mean, thoda sa twisted. Otherwise, I would call it the same variety here. Let me go back to this reference first, and then we'll have a little discussion. So when we talk about this, what we need to understand is paper कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँ, फिर हम बात करेंगे कि क्या उसका रेफरेंस रहेगा. So when we talk about this, you would see that the thing that they were talking about is, in a sentence they were talking about, आप हमें ये बताइए which part of speech is that, right? तो बताना था कि वो adverb था, adjectives थे, was it considered to be a conjunction or preposition? So that's what they were talking about. तो ये एक छोटा सा रेफरेंस था जो हम सबको पता है, हम सब ने ऑलरेडी किया पहले कर भी रखा है, बहुत बार हमने प्रैक्टिस किया था. तो ये बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट्स थे. There were some 2 questions on tenses as well. You were supposed to identify that as a part of a tenses. You were supposed to actually, segregation was been given, and from there you were supposed to find out which is the right answer there. Primarily you had 3 questions on vocabulary. और vocabulary ऐसी कि बहुत ही let me not use it a wrong word here, but it was of the basic level, right? Anyone would have been in a position to do it. जिसने अगर थोड़ी सी भी अगर क्लास 11th में भी थोड़ा सा कुछ पढ़ा है तो vocabulary would be covered in there. That was a portion. Then there were 3 questions on spelling. So there were some spelling mistakes. You were supposed to find out which of them is the wrong one, and then in one of the questions you were supposed to find out which of them is the correct one here. When we talk about idioms, yes, idioms was also the part of it. We also moved into known as figure of speech. There was one question on figure of speech and one question on sentence correction. As we all know, reading comprehension is something which is missing from the part, right? Reading comprehension इसके अंदर नहीं होता है, ना ही कोई पैरा जम्बल्स का रेफरेंस होता है, ना ही पैरा कंप्लीशन, एंड वी ऑल्सो डू नॉट हैव समरी बेस्ड क्वेश्चंस हियर, राइट? तो इसमें एक खास बात ये थी कि ये जो आरसी वाला प्रॉब्लम होता है जिसमें पढ़ना बहुत सारा होता है और फिर कुछ शायद 1 या 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, वो मिसिंग था. नो पैरा जम्बल्स, नो पैरा कंप्लीशन, नो समरी बेस्ड क्वेश्चंस वर बीन देयर. द क्वेश्चन पेपर वाज समथिंग लाइक, जैसे हेमा मैम ने कहा कि अगर इफ आई टॉक अबाउट जीके का पेपर, दे वुड बी इन अ पोजीशन टू गेट इट डन इन 5 मिनट्स, तो मैं कहूँगा ये भी कोई 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम, इट वुड हैव टेकन 10 मिनट्स आई बिलीव, नॉट इवन 15 मिनट्स. 10 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम. वैसे 8 मिनट्स के अंदर स्टूडेंट्स ने इसे कर लिया था. इट वाज अगेन अ पीस ऑफ केक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर. So this is how it was an easy job for most of the students here. Considering you are appearing for a paper, जब हम पेपर में अपेयर करते हैं, क्वेश्चन कितना ईजी क्यों ना हो वो डिफिकल्ट लगने लगता है, राइट? एक नेचुरल फिनोमिना है. तो नेचुरल फिनोमिना के हिसाब से हो सकता है कुछ एक आधा क्वेश्चन आपने इधर उधर कर लिया हो, बट व्हाट
But I would say here, out of 16 questions, you would definitely have 11 questions. You would definitely have 11 plus questions that would make sense here, right? So 11 questions ऐसे हैं जो आसानी से किए जा सकते थे. 11 questions ऐसे थे जो बहुत comfortable level पे आते थे. 11 questions ऐसे थे जो बहुत आसानी से one could have derived in here, right? So this was one of the things that we all need to understand here. So let me, if faculty members can help me out with the next section, which was all about analytical and logical reasoning. Hema ma'am, Rahul sir, what do you say? How was it about analytical and logical reasoning? कितने questions किए जा सकते थे? Because to the feedback that we have taken from the students, we can identify that जिन भी स्टूडेंट्स हमने फीडबैक लिया है, हमने सबने कहा है that 10 plus questions, or I would call it as out of 12 questions, there were 9 questions. 9 questions तो doable थे, right? Your take on that, Hema ma'am, in case you can help us out with that as well. Rahul sir, if Girish sir is not there, I think he had some network issue, right? So yes sir. Right. Sir, as I discussed with Girish sir, the paper was very easy. क्वेश्चंस की बात करें, सारे जैसे सर ने बताया डूएबल क्वेश्चंस थे. कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे इतने ज्यादा. जितना सर से मेरा डिस्कशन हुआ था इन स्टूडेंट्स से, पेपर क्यूए एंड एलआर ऑलमोस्ट सेम लेवल का था. एनालिटिकल रीजनिंग की भी बात करें तो काइंड ऑफ सेम लेवल. एंड सर इज आल्सो सेइंग कि ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 to 10 questions after 12 definitely students can attempt. Yes, because that section had 12 questions, right? Yes sir, 12 questions. 2 से 4 questions का सर ने बताया कि yes 2 से 4 questions might be student को problem create कर सकते हैं, but if student ने हमारे सारे handouts and books के questions किए होंगे, then definitely he can attempt at least 8 questions out of these 12 questions. Absolutely correct sir. And analytical portion also overlapped with the quantitative aptitude. क्या उसके अंदर भी कुछ इस टाइप के questions थे जो quantitative aptitudes में थे सर? सर नहीं, क्यूए का सर मैक्सिमम क्वेश्चन सेपरेट किए गए थे. क्यूए के क्वेश्चंस डिफरेंट थे एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल को सेपरेट किया था. सेपरेट था, obviously there was no QA questions. Yes, correct. So when we are talking about analytical, there were pure analytical questions. It did not include the quantitative aptitude variety questions, correct? That's what I think. Good enough. So Bajrangals, आपको ये पता लग चुका होगा कि how was the paper like and how were we supposed to go about this. Let me talk about another last 1 minute. Let me help you out with what is the total score that we are talking about. देखो, अगर इस पूरे का अच्छा एक स्कोर को हम मान के चलते हैं तो स्कोर को अगर मान के चलें तो 49 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, राइट? 49 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर दैट अ स्टूडेंट शुड एक्चुअली बी गेटिंग इन हियर. अब ऐसा क्यों है सर? अभी हम सब कह रहे हैं कि सब के अंदर अच्छे क्वेश्चंस थे. वन कुड हैव डन मोर देन 12 क्वेश्चन, मोर देन 13 क्वेश्चन, मोर देन 14 क्वेश्चन. स्टिल आफ्टर दैट वी आर सेइंग दैट ओनली 49 प्लस फॉर अ वेरी बेसिक रीजन. जैसे मैंने आपको कहा कि हम जब पेपर देते हैं तो अंडर स्ट्रेस होता ही होता है, करेक्ट? वो एक यू स्ट्रेस बोलिए, डी स्ट्रेस बोलिए, व्हाटएवर दैट यू कॉल इट, वी आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस. एंड इन अंडर stress we might underperform with some of the questions. जो आसान होते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाते हैं. तो इस कंडीशन के अंदर मेरा थोड़ा सा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर ऐसा है तो मार्क्स 1 या 2 मार्क्स से नीचे की तरफ आ सकता है. बट यस, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, जो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो 55, 54, 53 इज अ वंडरफुल स्कोर. अगर आपका 52 प्लस है, दैट्स गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट स्कोर इन दैट, राइट? So I'm sure आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे how would the things go, right? So that is what we would recommend here. Rahul sir, your take on that? Hema ma'am, in case you want to make some kind of prediction here, how would that be? Sir, I'll agree with you that if a student have attempted 49 questions, right, and 49 and more question with 100% accuracy, then that will be sufficient for a student to get admission, right? And yes, as correctly said, general awareness में आपका जो ideal attempt है, that is 11 to 12 questions. So overall, if we look at general English, quantitative aptitude, general awareness, and analytical and logical reasoning, जो यहाँ पे good score हमने लिखा है, right? I think इससे minimum अगर बच्चा जाएगा तो थोड़ा difficult हो सकता है बच्चे के लिए. So 48, 49 is the ideal score for a student. Absolutely. So ये
स्टार्टिंग पॉइंटर है बॉयज एंड गर्ल्स, इसको ये मत समझिएगा कि 49 वाओ, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, काम एंड कंपोज माइंड ऑफ द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां पे कैसे, जैसे मैंने हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी बात किया था कि डिपेंड करता है कि टॉप 15% में क्या स्कोर आ रहा है। तो 49 तो आएगा ही, इसके बाद जो भी होगा वो अच्छा होगा। So anything less than that would be or maybe a dicey element to look into, right? So I'm sure you would have got a score of कि क्या score है। अगर आपका ये score है, then I would recommend you all to please make sure that you start preparing for your personal interview and for the VAT session. If you're already the part of Pratham Test Prep, I would request you that please make sure that you join on 5th, that is Tuesday at 7 p.m. through your PSIS. Please be the part of the interview introductory session where we would be helping you out with how to go about these interviews, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, and everything about the interviews. That's what we'll be discussing about. And over the period of time, we would also be looking into one-on-one mentorships as well, right? So please make sure that you are well prepared for that. And for all those students who would have prepared for the GMAT, we are going to have a session in another 30 minutes where we're going to discuss about the GMAT analysis as well. So stay tuned for that. That would be on a different YouTube video, but the same channel. For all those students who are here for the first time, I would request you all to please make sure that you subscribe to this channel. And for all those students who have still not liked the video, make sure that you like the video. That is what a little part from our side. Thank you, faculty members. Thank you for being there. And thank you, students, to be the part of it. All the best. And let's go ahead. There are only two things left now. Interviews. We are left with interviews and we are left with CUET. Everything else has been done. Relax. So don't worry about it. So we're going to catch you at 8 o'clock for the GMAT analysis at 8 p.m. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir.